Mr. Girish Lokotia is a chartered accountant, has been doing business for more than 10 years now, running it completely successfully, and so far they've been able to impact more than 300 businesses and have been able to close more than $1 billion worth of transactions for their businesses. Let's try and understand how he has been able to scale his business and understand few things about entrepreneurship and building businesses in India. Let us invite Mr. Girish Lokotia with a big round of applause. So, yes, Giriji, we would like to know more about what you are doing from you. So by profession, I'm a chartered accountant. I came to Pune in 2005 for doing my articleship. I am basically from Nagpur, and I did my articleship here from the local CA firm, Khandelwal and Jain. And in the last year, I did my industrial training from Citibank. Immediately after my industrial training, they absorbed me as an assistant manager in treasury. I worked there for 9 months, but was not enjoying my job. Quit Citi at the peak of subprime crisis, came to Pune, started with CA teaching. So I was teaching IPCC students at Ujjwal Academy and Indulal Complex. Taught at least 4 to 5 batches, mostly crash courses. In the morning I was teaching, and during the day I was working with a CA firm as partner. So that's how it started. I also ran my own CFP Institute, Certified Financial Planning Institute, Training Institute, for a brief period. Then in 2011, finally, I got some assignments into finance consultancy, debt raising. From there, the journey started in the field of finance. In 2014, I formed my own independent advisory division, Pracha Advisors. Till now, we've raised close to around $1 billion in that for local businesses. That was more on the form of raising funds for businesses from banks and financial institutions. And in 2017, from arranger of funds to provider of funds, we started our own NBFC. So that was a step in the kind of vertical integration direction. And in 2023, we are 22. We got a license for starting alternative investment fund, which is an equity fund. So basically, we provide all the services related to finance under one umbrella. That's an exciting journey from Citibank to teaching to CA practice to whatnot, and eventually running own NBFC and alternate investment. An exciting journey of running so many businesses, but related to finance field. Yeah. So, what sort of challenges that you have faced while you were hopping in from one business to the other and eventually landing up to running own NBFC fund? So basically, when you're charting your own way, so nothing is laid out for you. So there is not a roadmap which you can follow. And obviously, I come from a very humble background. So कोई ऐसा नहीं था कि फैमिली सपोर्ट था कि आपने सिटी बैंक छोड़ के आप पूना में आ गए तो कोई फैमिली से क्या कहते हैं रेगुलर इनकम आ रही है वगैरह वगैरह. सो इनिशियल डेज द चैलेंज वाज सर्वाइवल. इट वाज नॉट सो मच ऑफ अ प्लानिंग बट ऑफ सर्वाइवल कि यार अगला महीना टिकना है, अगला क्या कहते हैं क्वार्टर टिकना है. कोचिंग वाज डूइंग गुड बट आई वॉज ओनली इनटू क्रैश कोर्सेज, वो 15 डेज का बैच वगैरह वगैरह. एंड उसमें कितना होता है, 15-20 बच्चे आते हैं. बेसिकली बच्चे जो हर चीज़ ट्राई कर लेते हैं और उनको कुछ कहीं नहीं मिलता है, वो नए टीचर को एक चांस देते हैं कि चलो ये शायद हमको कुछ सिखा देगा. तो रेगुलर क्लासेस जब चालू की तो उसमें सिर्फ 3 बच्चों ने रजिस्टर किया था. सो दैट वाज लाइक यार 3 महीने पढ़ाना है और 3 बच्चों को पढ़ाना है, तो पता नहीं पॉजिटिव मार्केटिंग ज़्यादा होगी या नेगेटिव मार्केटिंग ज़्यादा होगी. सो काइंड ऑफ अवॉइडेड दैट. So there came a point where I was left with 7,000 rupees. I came with some money, accumulating it when I was doing job for Citi, but all the reserves got exhausted. So there came a point where I was left with 7,000 rupees in my bank account, and the landlord was following me for rent, and the rent for the month was 11,000 rupees. So I reached to that point. So the first few days were of survival. कि आप कैसे क्या कुछ ऐसा करोगे जिससे कि आप टिक पाओगे करके. तो रिसोर्सेज वाज द मेजर चैलेंज. व्हेन यू कम फ्रॉम अ वेरी एस्टैब्लिश्ड बैकग्राउंड तो वो प्रॉब्लम नहीं रहता है. आपको सोचना नहीं पड़ता है, कुछ लोगों को हायर करने के पहले आपको सोचना नहीं पड़ता है रेंट पे ऑफिस लेने के पहले. सो दैट वाज अ चैलेंज कि शुरुआत में हाउ डू यू सर्वाइव एंड हैव सम रिसोर्सेज कि यू सस्टेन दैट पीरियड. लेटर ऑन द चैलेंज वाज ट्रैक रिकॉर्ड. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप किसी को काम मांगने जाते हो तो सामने वाला सबसे पहले ये बोलता है कि भाई किसके लिए पहले काम किया हुआ है.
So getting few assignments initially was one of the biggest challenges. कि कोई नए लड़के को काम नहीं देता है, आप कितना भी अच्छे से पीपीटी बना दो, कितना भी अच्छा उसको क्या कहते हैं प्रोजेक्शंस बना के दे दो, बट ही विल से कि इसके पहले किसका काम किया है. सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस कि आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है. एंड फाइनेंस इज अ काइंड ऑफ वर्क दैट nobody likes to share with a new person. Nobody wants to be the guinea pig or the person of experiment for anybody else. कि कोई अपने पे क्या कहते हैं हाथ साफ करके एक्सपीरियंस ले. सो अगेन दैट वाज अ चैलेंज कि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था. एंड द अदर थिंग देन दैट वाज कि ब्रांड नेम नहीं था करके, कि जब शुरुआत में चलो ठीक है थोड़ा बहुत असाइनमेंट्स कर डाले, बट देन व्हेन वी वर कॉम्पीटिंग विद बिगर एमएनसी काइंड ऑफ प्लेयर्स लाइक यू गाइस हैव चैलेंजेस फ्रॉम द बिग फोर्स, कि एक इस्टेब्लिश ब्रांड नेम नहीं था. उन लोगों को क्या होता है कि वो लोग अपना विजिटिंग कार्ड किसी केबिन में भिजवा देते हैं तो उनको तुरंत अंदर बुला दिया जाता है, और आप जब प्रचय बोल के भिजवाते हैं तो सामने वाला बोलता है कौन, नहीं पता. तो दैट वाज अनदर बिग थिंग कि यार ब्रांड नेम नहीं था, और ब्रांड नेम बनते बनते बहुत टाइम लगता है. So these were the challenges which we faced in the initial few years. And you have overcome those challenges to run this business successfully for more than a decade, and that says it all. So you have done that successfully, and we are like glad to see you here. While doing this, one more thing that I wanted to understand, since you are in entrepreneurship for more than a decade now, how important is your first team, first set of 5-7 people? And what do you look up to when you want to like build those kind of people who will take it forward? Considering running successful business is not one man's job. You need a good team to ensure that you do that. So would you like to share some insight on that? So initial few days, you don't get to choose your team. You just you have to accept the people who are willing to work for you. Let's be realistic. आपने नया प्रैक्टिस चालू किया है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार रैंक होल्डर्स या बेस्ट पीपल इन द सिटी वुड कम एंड वर्क फॉर यू. Let's be very realistic. First few people are people who are willing to work for you and under the setup. जो छोटा सा ऑफिस आपका रहेगा, आपने 2 BHK में क्या कहते हैं 1 BHK में आपने ऑफिस डाल दिया रहेगा, वो मेक शिफ्ट वाला फर्नीचर आपने क्या कहते हैं उठा लिया रहेगा, तो वैसे में जो काम करने के लिए आपके साथ में रेडी रहता है वो आपकी पहली टीम बनती है. बट आई बिलीव अ लॉट इन पावर ऑफ टीम. मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी अकेला इंसान आखिरी तक सब चीज अचीव नहीं कर सकता. यू नीड रियली गुड पीपल, एंड पीपल शुड बी समबडी हु हैव फेथ ऑन यू, हु हैव ट्रस्ट ऑन यू, हु बिलीव इन योर विजन, एंड हु हैव द सेम लेवल ऑफ पैशन और कमिटमेंट. तो व्हाट आई इनिशियली सॉ वाज पीपल विथ हाई EQ, because these are the people who have compassion, they have a sense of loyalty. Okay. So they'll stick with you for a longer period. And the second thing was कि people who share that hunger. क्या होता है कि हंगर आपके बैकग्राउंड से आता है, कि आप अगर छोटे बैकग्राउंड से हो तो आपको बहुत हंगर रहती है कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, एंड बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें अगर मैं अच्छा करता हूँ तो मेरे को बहुत फायदा होगा करके, या फिर मेरे को बहुत जिद होगी करके. तो आई लुक एट हंगर एंड पैशन, जो मैं शुरुआत में देखा कि यार अपने जैसे लोग होने चाहिए जिनको काम करने में मजा आता है, पहली चीज, और जो काम दिल लगा के करते हैं. बाद में तो क्या है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इनिशियल टीम. इट कैन नॉट बी टोटली वर्क रिलेटेड. यू हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ फीलिंग वेयर दे फील दे बिलोंग. So you have to explore other aspects also. You have to connect on multiple level. You have to know what is going on in their head, what is going on in their personal life, and you have to connect with them basically to form a strong team. Excellent. So the mantra that we got here is to ensure that you start and hire as many people as possible, and then experiment and learn from what you are doing over the period of time. That is excellent to know how we are building our first team. Since you said that Prachay as a name or as a brand has been established in last few years, you've been in business for more than a decade now. I'm sure it must have been challenging for you to actually reach out to people. Like you said, visiting card भेजने के बाद maybe people don't revert. What sort of marketing strategies you deployed or you thought of, or networking that you used to ensure that you reach out to right people, since your brand name was not that popular at time? So marketing in initial days, I believe the biggest brand ambassador that you can have, or the biggest marketeer that you can have, is your client. आपके client ने आपके बारे में बोलना चाहिए, and that's what basically CA Institute also wants us to speak. Wants us to do, कि what we should do. So basically always what I did and what I suggest you all also is first try and have a pillar client.
a client which will drive say 30%, 40% of your revenue for the initial few years. So always try and get a pillar client, somebody who is very well established, who is a known name in the market, and try and give him the kind of service that he is your raving fan. आपको सामने वाले से एक अच्छी टेस्टिमोनी नहीं लेनी है, अच्छी रेफरेंसेस भी लेने के हैं. तो पहले एक ऐसा बंदा उठाइए जिसका बहुत पोटेंशियल है या जिसका बहुत नाम है, और उसको ऐसी सर्विसेज दीजिए जिससे वो सिर्फ खुश नहीं है बट बहुत ज़्यादा खुश है. बिकॉज इफ अ पर्सन ऑफ कंसिडरेबल रेपुटेशन इन द मार्केट स्पीक्स वेल अबाउट यू, दैट बिकम्स योर बिगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर. एंड वॉट हैपन्स इज वेन एवर यू आर ट्राइंग टू गेट न्यू वर्क एंड यू आर अप्रोचिंग समबडी, ही विल ऑलवेज आस्क कि आप किसके लिए काम करते हो. तो आपके पास में वो नंबर होना चाहिए जिसको आप पहली सर्विस दे रहे हो कि यार इसको फोन करके पूछ लीजिए मेरा सर्विस कैसा है. और उसके लिए जरूरी क्या है कि वो बंदा इतना खुश रहे कि वो आपका नाम बहुत अच्छे से ले. सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग गोइंग अबाउट इट, वेयर यू नीड अ वेरी हैप्पी कस्टमर, वेरी प्राउड कस्टमर, एंड मेक हिम एक्सट्रीमली, डोंट मीट हिज एक्सपेक्टेशंस, बीट हिज एक्सपेक्टेशंस, एंड ऑलवेज ट्राई एंड डू वैल्यू एड एंड क्वांटिफाई इट. अगर आप ये कर पाते हो तो क्या होता है, आपको एक बेस मिल जाता है, आपको एक रेवेन्यू स्टेबलाइज करने वाला एस्पेक्ट मिल जाता है. तो आई बिलीव कि अ पिलर क्लाइंट हु इज रेडी टू स्पीक फॉर यू इज द बेस्ट गाय, नॉट समबडी हु वुड से कि नहीं ये बंदा अच्छा है पर मैं किसी को बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरा काम नहीं करेगा करके. So you have to identify the right guy who would take your name in front of people. There are other guys also, especially in business, who would say, "Nee yaar, I don't want to give his name to anybody, his reference to anybody, because if he gets another client, he'll give me less value or he'll give me less focus." So you have to find the right guy who is in the aspiring stage, ambitious stage, who wants to grow and grow with him. I would rather suggest कि it is high time now that CAs look at their skills. मोर देन ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन. हो गया, बहुत ज़माना हो गया है अभी, मतलब वी हैव बीन देयर एंड वी हैव बीन डूइंग दिस स्टफ फॉर द लास्ट 70-80 years नाउ. इट्स हाई टाइम दैट वी ऑल्सो लुक एट आवर ओन प्रोफेशन इन डिफरेंट मैनर एंड रियली ट्राई एंड प्रोवाइड वैल्यू एडिशन सर्विसेज टू द क्लाइंट, जहाँ पर एक तो उसका पैसा बने या पैसा बचे. आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात करिए. आप किसी भी बिजनेसमैन के साथ में जाके अगर बैठेंगे और उसको बोलेंगे हाउ कैन आई सेव योर मनी और हाउ कैन आई help you in earning more money, he'll definitely give you a seat and talk to you. So look at broader aspect of business, be kind of an advisor to the businessman, kind of his in-house team, his core team, and help him in his journey to succeed, because when you are helping him to succeed, that's when you will also succeed. Excellent way of running your businesses successfully. So having an anchor client to take care of bread and butter to ensure that you survive, and then you rather innovate. Now that you've been in business, you've met so many people doing a lot of interesting ideas. What is that one or a couple of good qualities that you look for in an entrepreneur or a business person, which will make them stand out? Say that okay, initial impression with this person looks like someone who can crack it. तो जोकिंगली आई से कि एंटरप्रेन्योर वो प्राणी है जिसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और खुजली बहुत ज़्यादा होती है. इन द सेंस दैट ही हैज़ लॉट ऑफ हंगर एंड लॉट ऑफ पैशन, हंगर टू लर्न एंड टू ग्रो, एंड दिस इज समथिंग जो टाइम के साथ में कमी नहीं होती है. आई थिंक दैट आई हैव द सेम लेवल ऑफ एनर्जी गोइंग टू वर्क विच आई हैड व्हेन आई वाज 24-25. You never get tired of growing, you never get tired of learning, you always go to the work thinking ki what I can learn more today. You acquire different skills as you grow in life, as you grow in career, as you grow in business, but you should always have that immense thirst for learning. मेरे को क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा स्कैम किया जाता है हमारे साथ में बचपन से. वो होता है कि बोलते हैं कि 12th पास कर लो, लाइफ सेट है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लाइफ सेट है. उसके बाद में बोलते हैं सीए कर लो, बहुत कम लोगों का होता है, आपका हो गया तो लाइफ सेट है, उसके बाद में कुछ करना ही नहीं है करके. जिस दिन सीए बना और जॉब में लगा, मेरे को ऐसा लगा यहाँ पर कौन सीए नहीं है, एवरीबडी इज सीए. तो प्रॉब्लम क्या है कि हमको ये सिखाया जाता है कि कुछ साल लाइफ में मेहनत करने की है और कुछ साल लाइफ में सीखना है, जो कि सबसे बड़ा झूठ है. यू वोंट बिलीव, मैं आज भी उतना ही पढ़ाई करता हूँ शायद मैं जितना सीए डेज में पढ़ता था. पढ़ाई के बुक्स बस चेंज हो जाते हैं.
If you have that hunger for knowledge, you continuously keep on learning. तो that should be your clear cut message to yourself कि भाई सीखना है, अगर आपको entrepreneur बनना है, या if you want to add value to yourself, you have to continuously learn. आपने जब CA का कोर्स किया तो आपने सिर्फ वो सिलेबस में जो नॉलेज था वो नॉलेज एक्वायर किया और आपका नॉलेज टेस्ट किया गया और ये बताया गया कि भाई आपको ये नॉलेज आता है करके. दैट वॉज लिमिटेड नॉलेज, दैट वॉज टेक्निकल नॉलेज. There are a lot of aspects which CA curriculum doesn't teach. For that, you have to continuously keep on reading. You have to continuously keep on reading books on management, on self-help, and that's how you have to really, try and learn new things. So I believe the first thing is you should have immense thirst for knowledge. The second thing is passion. अभी बहुत ज़्यादा ये वर्ड लूजली यूज होता है और सबको ऐसा लगता है पैशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए. होता है क्या करके पैशन, और ज़रूरी क्यों है? पैशन यानी क्या कि आप कोई चीज़ कर रहे हो और आपको चीज़ बोर नहीं होती है. मतलब कोई चीज़ आप करना चालू करते हो और करते करते समय कैसे निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है, या भूख का समय हो गया और आपको पता नहीं चलता है. तो अगर वैसी कोई भी चीज़ करने में आपको मज़ा आता है तो आप बोलते हो कि यार इस चीज़ के लिए आई एम पैशनेट. सो अ पर्सन हु इज पैशनेट अबाउट वर्क will never get tired of working. I believe that if you love the work you do, you never work for a single day in your life. So that should be your idea. You should always, start exploring what is your calling. कि आपको मज़ा किस चीज़ में आ रहा है करके. Why that is important? Because business is an infinite game. It's not a game which you can play for 5 years, 10 years, 15 years. मैं सबको बोलता हूँ कि जिस एनर्जी से आज काम कर रहे हो, अगर उस एनर्जी से ही you can work when you're 55. That is the way of working. Don't work कि मैं 40 तक काम करूंगा फिर रिटायर हो जाऊंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा मैं रिटायर हो जाऊंगा. तो आप ट्रू एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बनते हो. आपको ये होना चाहिए मैं जो काम करता हूं उसमें मेरे को मजा आती है, टिल द लास्ट ब्रेथ आई कैन वर्क ऑन इट. Why should I feel a burden of working? So that is what passion is. कि you don't feel the burden of working, you enjoy it. And unless you do that, don't do it. मतलब keep on changing till you find your right calling, but find your passion. मैंने when I was doing articleship CA final का एग्जाम देके आया, तो when I was studying for CA final, I fell in love with the subject of finance. As soon as I returned from articleship, I went to my principal and I said, सर मेरे को अभी सिर्फ finance में काम करना है. तो that time there was no work of finance in the firm. So I was sitting on bench for few days, but I decided कि मेरे को finance में ही काम करने का है. Fortunately some work came. Then I decided कि if I want to pursue further career in finance, then I should go to a bank and work. And then I went for Citibank and did my industrial training there. I always taught finance. I never taught a subject which was not related to finance. Even while practicing, I was very clear that I will do assignments which are remotely related to finance. But I will not do anything other than finance. So when you find that right passion and you just dedicate yourself to it, तो होता क्या है कि आप यू स्लोली गेट बेटर एट इट एंड इट्स अ कंपाउंडिंग इफेक्ट. दे से दैट एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंडिंग. सो आपको मालूम होना चाहिए कि चीज़ें कैसी अक्यूमुलेट होती रहती है. अगर आप एक ही डायरेक्शन में स्टेप्स लेना चालू करते हैं ना, भले ही कितना भी छोटा स्टेप्स होता है, यू अल्टीमेटली रीच द डेस्टिनेशन. सो यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड मेक स्मॉल क्यूमुलेटिव लर्निंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Lot of words of wisdom and some hard-hitting facts for CAs who brag about being chartered accountants. But glad to know that in each one. And these are our small steps to build community like this, to ensure that people come out of their CA wala feeling and think beyond the perspective that they have been going through for a very long time. Now coming out of that, I want you to throw some light on next few years in India and the opportunities that are available for everyone, especially people who are from this particular background. How can we tap those opportunities and how can we ensure that our skills, our abilities are aligned to ensure that we make the most of the things which are available? So I'm very optimistic person otherwise also, but I believe that next 25 years are India's years. And they are based on facts. If you'll see throughout the world, there is a very gloomy situation. UK is in trouble. US is facing a lot of financial problems. So throughout the world, there are a lot of problems.
India is the only bright spot in the entire world economy right now. And there has been a lot of political stability over the last 10 years, which is a very good thing because that indicates policy consistency. For a country to really take major steps in any direction, you need policy consistency. So I believe that political consistency is there with political stability. Then what I believe is we are having a very strong leadership team at the center, and the world image of India is changing. You would see that there is clear difference in the way that world has been looking at India. तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगला 20-25 साल इंडिया का है. रीजन है कि हमारे पास में 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन इंडिया. सो सबसे बड़ा मार्केट कहाँ पर है? इंडिया में है. वाई चाइना वॉन्ट्स टू गो टू अफ्रीका? बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स. अपने पास में डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक डिमांड है. तो आपके पास में एज इट इज वर्ल्ड का 1/6 मार्केट है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके पास में मार्केट्स है कि नहीं है. अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो इंडिया इज रियली ब्लेस्ड. वी हैव 3 सीजन्स, वी हैव ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव लॉट ऑफ हैबिटेबल लैंड एंड पॉपुलेशन. Something that we look at as a negative factor will become our biggest strength. And we have a young population and very talented population. So basically सब wherewithals है, align किए हुए है. और जिस हिसाब से सिचुएशन है वर्ल्ड में, अगला 25 साल सच में क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए. और मेरे को लगता है ये होएगा भी, बिकॉज इन द इनिशियल 50-75 years we were still coming out of the shackles of slavery in terms of mindset. We have been in slavery for when foreign rule for more than 450 years. That's a big time to basically आपका जो free spirit है, free क्या कहते हैं mindset है, उसको capture करने के लिए बहुत बड़ा समय होता है. And now after 50 years, 75 years, finally we have started taking pride in ourselves. Because now the world is respecting us, we have also started feeling proud about ourselves. So I believe कि एक वो बहुत ज़्यादा major change हो रहा है. And also it is bound to happen. Reason is in 1700s we were accounting for 30% of world's output. Okay, and now that figure is somewhere around 3 to 4%. We are 18 to 20% of world's population. And we are producing what? 3 to 4% of world's output. So there is a clear cut gap which needs to be bridged. मतलब ऐसा नहीं है कि ये गैप ब्रिज नहीं होएगा, ये गैप ब्रिज होना जरूरी है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचना जरूरी है. अगर आप 20% जनता 4% आउटपुट दे रही है तो कुछ तो गलत है. अभी ये सब चीजें होने के बाद में गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है हमारे पास में जो चीज कमी है वो है पैसे की. Capital is the thing which has not been in India. And I believe that yes, foreign capital is coming into India. It is bound to come in India because there is too much capital chasing too few opportunities in the world right now. So capital will flow in, but what as a country we can do much more is rotation of capital. जितना पैसा है अपने पास में वो भी hands move होना चाहिए. आई बिलीव दैट इट इज नॉट कि आप कितना कमाते हो, आपके थ्रू कितना पैसा मूव होता है, दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी. एंड अ कंट्री कैन नॉट बी हैप्पी इफ दे आर नॉट प्रॉस्पेरस. ठीक है, तो होना ही है. अगला 25 साल इंडिया का ही है. यू जस्ट गेयर अप योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू इट इन योर स्मॉल वे. वी नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट. जो हम लोग कर सकते हैं देश के लिए या फिर बिजनेसेस के लिए यहाँ पर, वो हमारे ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई बिलीव CAs हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच दे हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी, दैट दे हैव टू हेल्प बिजनेसेस टू ग्रो. हो गया बहुत समय जब हमने उनको टैक्स बचाने में हेल्प की या कंप्लायंस करने में हेल्प की. अब समय है कि हम लोग उनको एक बेटर बिजनेसमैन होने में हेल्प करें, बेटर बिजनेस करने में हेल्प करें. अगर हमने वैसा माइंडसेट पकड़ लिया, उनका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा. Excellent. So basically what he wants to say is best time to start is right now. Yeah, absolutely. Get going. मतलब अभी नहीं हुआ ना तो कभी नहीं होएगा. ये अभी नहीं हुआ ना, अगला 25 साल नहीं हुआ ना, तो आई डोंट बिलीव कि वापस कभी समय आएगा. दिस इज द गोल्डन. Thank you very much for the session. I think we can take couple of questions with him and we can then maybe move on. Yes. So, sir, you are very much deciding sharing your experience. So, my question to you is that in your career, when you shifted
from profession to business. So what was the failures you experienced and what mindset you adopted and what skill set you acquired to change from profession to business? Biggest, I think, was two aspects. One was, I call them competencies or skills. So I always had the technical knowledge when I was working as a professional. The other skills which I had to acquire, one of them was HR management or talent management, which I call, because that is something which is not taught in our curriculum. And I believe that this is one of the toughest topic on planet. That was one bigger aspect which I had to learn, how to select good people, how to make a good culture in the organization, how to have performance management, because that is what leads to scalability. If as an organization you can attract a lot of good people and you can make them work in a very productive manner and still keep them motivated and reward them nicely, that is basically the challenge. So HR management was one skill which I learned and I'm still learning. I'm still a student at it. The second aspect again, which CAs are very bad at, I was very bad at, was marketing or branding. That was a whole new aspect in together, and I had to read a lot of books. I had to change a lot of mindset to learn those skills. So branding and marketing is something that we need to learn to be visible in today's world. So when you pivoted from financial advisor to actually providing finance, how did you get your first set of customers? And when I say first 2-3 set of customers, probably borrowers would be easy for you, but how did you get the lenders for your company? So for us, the idea was, it was just a shift in the way that we were delivering our product. But even when we were working as an advisor, we were kind of having that ownership or that responsibility or that control, even though money was going from somebody else's pocket. But we were always with a mindset कि भाई पैसा अपने थ्रू लगाए करके, तो वो फर्क नहीं पता चला. अभी भी जब हम लोग NBFC से फंड करते हैं ना, तो वी आर वेरी क्लियर इन आवर विजन व्हाट वी वांट टू डू. सो वी डोंट कॉल आवर क्लाइंट्स बोरोवर्स. हम लोग बोरोवर्स नहीं बोलते. आपने हमसे पैसा लिया तो हम आपको बोरोवर्स नहीं बोलेंगे, हम आपको क्लाइंट बोलेंगे. When we are giving money, we don't say it loan, we say it as financial solution. So I will say that the biggest success point for us as a NBFC was that we didn't change our mindset. We went with the same mindset of an advisor into NBFC, in which people found very refreshing, because normally when you're giving money, your hand is like that. So you're kind of dominating the borrowers. We never had that mindset, and we never want to get that mindset, and that really helped us on the business side. On the investment side, what helped us was that we had an established track record. Not that we have done close to $1 billion transaction. Our biggest credential is not a single transaction has defaulted. So we had a track record in the entire market that these guys know their business. They know how to lend, they know how to recover money, and they know how to guide businesses to use the money in the best possible format. So that was the biggest credential which helped. So I always say that you basically build on of what you've already done. So what we have done as an advisor basically helped people for whom we help their businesses grow from grounds up. They were the first investors with us, because they have seen the way we understand business and the way we understand finance, and how our approach is different. So जिनको पहले help की, उन्होंने बाद में हमको help की. Thank you very much, Girish ji, and big round of applause for Girish ji for giving his time and sharing insights about the business.